Hello students, welcome back. So today we are going to start another topic that is about the 11 phylum. In previous topics already we have covered the basis of classification on which we have divided these 11 phylum. So now today one by one we will discuss about each and every phylum with their distinctive feature as well. Right? So we will start with the first one, that is Porifera. Okay, first three Porifera, then Cylindrica, and the third one is the Tenophora. So the basis will be remain same for all the phylums. Okay, हम जितने भी phylums पढ़ेंगे, basic feature जो हमने basic general characters हमने discuss किए थे, we will compare those character with each and every phylum. So let's begin with the first one, that is level of organization. हमने पढ़ा था level of organization Porifera क्योंकि क्या है, लोअर एनिमल्स है, सो वी कैन से सेल लेवल. These are the multicellular, but these are not the aggregate. Okay, they will not form any tissue. So these are the cellular level. Then in Cylindrica, it would be tissue, and in Tenophora, again it would be tissue. Okay, so we will not discuss more about it because already we have covered. Now another one is symmetry. What type of, how they can be divided into two equal halves, whether it is possible or not possible. If it is possible, then again we have divided radial symmetry and bilateral symmetry. Okay, so on the basis of that one we have Porifera, in which mostly they are having asymmetrical. इसमें क्या है कि जितने भी ज़्यादातर पोरीफेरियंस होते हैं उनमें कैसे सिमेट्री होती है, asymmetrical. Okay, and why? Because the structure is not so much defined. Okay, it can be like this. So if we talk about the sponges, in case of sponges no particular proper structure is there, so symmetry is not possible in case of sponges. So variations are there in case of Porifera about the symmetry. Now if we will talk about the Cycon, okay, in case of Cycon, in your book diagrams are given, go through it, that if you see the structure, it is a cylindrical structure, and due to the cylindrical structure, and there will be some what type of symmetry, it would be radial symmetry. Okay, so there are different structure in case of Porifera, that's why the symmetry will also change. It may vary example to example, right up to here. Then in case of Cylindrica, it is of radial symmetry. Okay, we know that what is radial symmetry and what is bilateral symmetry. And if you will talk about the lower animals, अगर आप evolution में lower animals से start करेंगे, mostly they are having या तो वो asymmetrical होंगे या फिर radial symmetry, right? And here in case of Tenophora, it again there will be radial symmetry. Okay, now what about the germinal layer? That it is made up of how many layers? Ecto, meso, and endoderm. Okay, we know about 3 layers. But if we again talk about the lower, there will be only 2 layers. What was the layer? Ecto and endoderm. There will be no mesoderm. Instead of mesoderm, there will be some other structure which is different in case of Porifera and Cylindrica and Tenophora. Right? So in case of germinal layer, we can say these are diploblastic, having only 2 layers, and between that there is mesohyle. Okay, एक्टो और एंडो के बीच में कौन सी क्या दिखने को मिलेगा आपको? There will be mesohyle. In case of Cylindrica, again it is diploblastic, and instead of that middle layer, it is there mesoglia. Okay, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? Mesoglia. Again in case of Tenophora, it is diploblastic, and the middle layer is also mesoglia in this case also. Okay, that much. Then coelom, that cavity is present or not. So if it is a only cell level of organization, no coelom is present here in this case. Again in Cylindrica, no coelom is present. Okay, again in Tenophora, coelom is absent. So what is the role of coelom? Because it accommodates the organ, and we know that we are not having any organ level of organization. आप यहाँ से चाहे वो Porifera हो, Cylindrica हो, Tenophora हो, किसी में भी organ level organization शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए ये क्या होंगे, coelom सब में absent, यानी कि वो जो cavity है वो absent होगी. Okay, another one body plan.
बॉडी प्लान क्या था कि whether they are having proper alimentary canal or not. Okay, if there will be alimentary canal, there will be mouth and anus. अगर सिर्फ माउथ होगा तो हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट बॉडी प्लान. अगर माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, कंप्लीट बॉडी प्लान. ओके, सो इफ यू विल सी द पोरिफेरियंस, क्योंकि बॉडी किससे बनी है, सेल से, सेल एग्रीगेट से. सो देयर विल बी व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट. नो सच टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पोरिफेरियंस. ओके, पोरिफेरियंस में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. सिस्टम क्या होता है, व्हेन देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देन टिश्यू एंड ऑर्गन. और ऑर्गन सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन्स कब बनते हैं, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज. तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है. नाउ इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा वी नो दैट ओनली माउथ इज प्रेजेंट. जब सिर्फ माउथ प्रेजेंट रहता है तो हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम. Okay, and this body plan is known as blind sac. It means that there is only one opening, एक ही opening होगी, right? In case of Tenophora also there would be that blind sac body plan. Okay, now the main important thing, it will start from the sixth one. इतने सारे characters तो आपने general में भी पढ़े थे. Now what would be the habit and habitat of the Poriferian, Coelenterata and Tenophora? If we'll talk about the habit and habitat of poriferians, जितने भी poriferians है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, mostly they are present in marine water. Okay, they are very less they are present in fresh water. Okay, so ज़्यादातर कैसे होते हैं, marine, और कुछ forms कैसी होती है, fresh water. Okay, and again these are sessile. I have not written here. These are sessile. Sessile की meaning क्या है कि when they are present, they are attached to the substratum. For example, this substratum, तो इससे क्या रहते हैं, वो attached रहते हैं. Okay, they will not move from one place to another place. ये क्या नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. As हम पता है कि एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे डू लोकोमोशन. ठीक है, बट स्पॉन्जेस आर द एक्सेप्शन. स्पॉन्जेस क्या नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं. तो दैट्स वाई दे आर सेसाइल. सेसाइल मतलब कि एक जगह सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं. बट येस, देयर लार्वल फॉर्म्स, दे आर द they can be do locomotion. लार्वल फॉर्म्स की अगर हम बात करें, वो लोकोमोशन करते हैं, राइट. एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा आपको कहाँ पे दिखेंगे, इनका हैबिटेट कैसा है, दे आर मरीन. ये कैसे जगह पे पाए जाते हैं, मरीन वाटर पे. ओके, बट एक्सेप्शन इज देयर हाइड्रा. हाइड्रा इज वन ऑफ द member of the example of Coelenterata which present in the fresh water. Okay, बाकी सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, they will be the marine one. Okay, Obelia, Aurelia, Physalia. So whatever the example of Coelenterata, it comes under the marine. Okay, they prefer to live in marine water. Now again, if we talk about the Tenophora, very important. They are exclusively marine. इनके जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ओनली मरीन वाटर. इनका जो भी हैबिट और हैबिटेट होगा वो कैसा होगा, मरीन वाटर. देयर विल बी नो एक्सेप्शन, नो सच एग्जांपल्स आर प्रेजेंट विच कैन बी फ्रेश वाटर. ओके, सो दैट्स व्हाई दे विल एक्ट एज अ प्लैंकटन. किनका एक्ट करते हैं, क्योंकि क्या है, मरीन वाटर में रहते हैं, तो एज अ प्लैंकटन वर्क करते हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, दे नेवर फॉर्म्स कॉलोनी. ओके, कभी भी आप इनको किसी कॉलोनी में नहीं देखेंगे. इन योर बुक यू कैन सी दैट दिस इज द डायग्राम ऑफ टेनोफोरा. ये दिख रहा है, इसमें क्या होता है, 8 कॉम्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम. इसीलिए हमको क्या कहते हैं, सी वॉलनट. इसका जो स्ट्रक्चर है आपको कैसा दिख रहा है, वॉलनट का. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट. ओके, नाउ another important thing, another character, that is body wall. Okay, अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, ठीक है, सबके बॉडी के स्ट्रक्चर में, इनकी बाहर की बॉडी में कुछ अलग चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सो व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट आउटर लेयर कभी भी कैसी होती है, एक्टोडर्म, इनर वन एंडोडर्म, राइट. सो डर्मा का मतलब ही क्या होता है, something related to layer. So if you will see the body wall of Porifera, they are the having outer dermal layer. बाहर की कैसे लेयर होगी, dermal layer. Okay, and the inner one gastral layer.
ठीक है, मेमोराइज इस टर्म कि आउटर की कैसी होगी, डर्मल लेयर। कभी भी आपको अगर अपने स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप कहाँ जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर पार्ट, सो आउटर इज डर्मल लेयर एंड इनर वन द गैस्ट्रल। एंड गैस्ट्रो और गैस्ट्रल ये किससे रिलेटेड है, स्टमक से, यानी कि इंटरनल पार्ट से। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रल लेयर। ओके, this one I have shown here one of the example of the poriphyrin। पोरिफेरन का एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें क्या है, स्ट्रक्चर शो करेंगे हम। सो व्हाट विल बी द आउट, अगर आप बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, वो आउटर डर्मल लेयर। एंड अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इनर वन, इट इज नोन एज गैस्ट्रल लेयर, राइट। नाउ दिस आउटर डर्मल लेयर, जो बाहर की लेयर है स्पॉन्जेस की या पोरिफेरेंस की, वो किसकी बनी होती है, इट इज नोन एज पिनाकोडम। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोडम। और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोएनोडम। ओके, साइंटिफिकली आउटर डर्मल लेयर को हमने क्या कहा, पिनाकोडम, और अंदर की लेयर को हम क्या बोला, कोएनोडोडम। ओके, नाउ इन दिस पिनाकोडम, अगर ये जो बाहर की पिनाकोडम जो लेयर है, इसमें कुछ सेल्स बने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी भी क्या है, टिश्यू, पहले सेल्स से टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन। सो इसमें भी कुछ सेल्स होंगे। तो आउटर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो आउटर में जो सेल प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, फ्लैट सेल्स। ओके, एंड दीज फ्लैट सेल्स आर नोन एज पिनाकोसाइट्स। यानी कि पोरिफेरेंस की जो आउटर लेयर है उसको हमने क्या कहा, पिनाकोडम। और पिनाकोडम में कौन से सेल्स होंगे, पिनाकोसाइट्स, जो कि फ्लैट सेल्स होंगे। ओके, अब कोएनोडम जो कि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कौन सा क्या है, कोएनोडम। इस लेयर में कौन से सेल्स होते हैं, कोइनोसाइट्स। सो कोइनोसाइट्स आर द सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द internal part, okay, internal part of the poriferians. Now what is important, this pinacocyte and coenocyte, and these coenocytes are what, these are the spherical cells. okay, coenocytes अगर हम देखेंगे कहाँ पे हैं, ये अंदर की तरफ है। अब these coenocytes having flagella, okay, हमें पता है कि flagella का काम क्या होता है, something to move। ओके, सो इन कोइनोसाइट्स जो हमने ड्रॉ किए हैं, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हियर, दिस शोज द कोइनोसाइट्स, जो कि अंदर की तरफ है। ओके, अब ये कोइनोसाइट्स का काम क्या है, कोइनोसाइट्स हैविंग द फ्लैजिला विच विल मूव द वाटर इनसाइड दिस पोरिफेरेंस, ओके, या फिर स्पॉन्जेस। देयर इज वन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोरिफेरेंस विच वी विल डिस्कस आफ्टर दैट, इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, पोरिफेरेंस में। एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस दैट देयर विल बी दिस कोइनोसाइट सेल्स। कोइनोसाइट्स में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस फ्लैजिलेटेड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। अब कितने नाम हो गए, कोइनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड और कॉलर सेल्स। all these three are same which is present in internal part of the sponges. Okay, now what will happen here, as the water will enter inside this, these coenocytes having these flagella which will circulate the water in flagella की वजह से क्या होगा, जैसे ही कोई water enter किया तो flagella क्या करेंगे, एक दूसरे को बीट करके उस water को circulate करेंगे body के अंदर। ओके, एंड ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सर्कुलेशन ऑफ वाटर। और हम कह सकते हैं जितना भी एक्सक्रीशन सिस्टम और द डाइजेशन सिस्टम, नॉट देयर विल बी नो प्रॉपर सिस्टम तो है नहीं क्योंकि ऑर्गन नहीं है, बट द थिंग्स कैन बी सर्कुलेटेड, द वाटर कैन बी सर्कुलेटेड। ओके, अपना न्यूट्रिशन ऐसे ही लेंगे ये, इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि जिससे क्या करेंगे, वो माउथ से लेंगे और एनस से एक्सक्रीट करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं इनके पास, नो इजेशन पॉइंट फॉर लाइक एनस। सो कैसे करेंगे, ये वाटर का सर्कुलेशन करेंगे अंदर ही अंदर, ड्यू टू दिस कोइनोसाइट सेल्स। और कोइनोसाइट सेल्स में ऐसी क्या चीज़ है जो हेल्प करते हैं, दे आर हैविंग फ्लैजिला। ओके, नाउ another point, body supported by the skeleton. Now we are saying poriferans क्या हैं, कहीं जा सकते नहीं है, ससाइल हैं। अब ससाइल हैं तो अगर there should be a proper exoskeleton, उनमें क्या होना चाहिए, we human beings are stiff,
ओके हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम है। इसी तरीके से पॉलीफेरेंस को या स्पॉन्जेस को एक स्ट्रक्चर पे या फिर एक जगह पे रहने के लिए क्या होना चाहिए? उनका स्केलेटन कुछ होना चाहिए। सो दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्पिक्यूल्स। उसे हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स। कुछ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑल ओवर अराउंड द बॉडी। बॉडी के पूरे जो बॉडी को क्या करके रखे? सराउंड करके रखे। वो कैसे स्ट्रक्चर है? स्पिक्यूल्स, स्पाइक्स से हम कह सकते हैं। इस तरीके से पूरे बॉडी में स्प्रेड है, जिससे कि क्या है? स्पॉन्जेस एक जगह प्रॉपरली खड़े रह सकते हैं। और वी कैन से दे कैन बी ससाइल। ओके, यहाँ पे हमने ससाइल वर्ड यूज किया है क्योंकि वो क्या है? एक जगह पे ही रहते हैं। एंड वाई दे हैपन सो? ड्यू टू दिस स्पिक्यूल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, क्योंकि स्पंजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो फाइबर्स होते हैं उसे हमने स्पिक्यूल्स कहा है। राइट, नाउ वी हैव डन आउटर, हमने बात कर ली। इनर वी हैव डन। ओके, एंड नाउ इनसाइड द इनर लेयर के अंदर भी क्या होगा? कुछ कैविटी होगी। ओके, देयर विल बी सम कैविटी एंड दैट कैविटी इट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। अब वाटर का जो सर्कुलेशन है वो कहाँ हो रहा है? स्पॉन्जोसील, यानी कि वाटर कैविटी दिस इनसाइड दिस कैविटी। इस कैविटी के अंदर किसकी वजह से हो रहा है? इन कोइनोसाइट सेल्स की वजह से, इन विच फ्लैजिला आर प्रेजेंट। सो अनदर स्ट्रक्चर इज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इज व्हाट? इट इज अ लार्ज कैविटी विच ओपन बाय द ऑस्क्यूलम। तो हमने कितने पार्ट्स पढ़े हैं इसमें? ऑस्टिया जो कि माइन्यूट पोर है। ओके, वाटर एंटर करेगा। आउटर लेयर है, इनर लेयर है गैस्ट्रोडम, okay, and outer pinnacoderm, and inside this there is a spongocyl जो कि कैविटी है जिसमें कि सर्कुलेट करेगा वाटर, and outer to that there are coinocyte cells having flagella, and after that there is one osculum and through this osculum water will move outside. Okay, that much. Now so this is a part of the body wall जो कि बॉडी में प्रेजेंट है। नाउ इफ यू विल कम टू द सीलेंट्रेटा, अगर हम सीलेंट्रेटा की बॉडी की बात करें बाहर से तो वो कैसी होगी? ओके, सो अगेन देयर विल बी आउटर, हमने बात करी एपिडर्मिस है। ओके, इनर गैस्ट्रोडर्मिस है। सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? दैट एपिडर्मिस हैविंग सम सेल्स। अब जो सीलेंट्रेटा के जो एपिडर्मिस यानी कि आउटर की जो लेयर है, बाहर से बॉडी के आउटसाइड क्या होते हैं? नाइडोब्लास्ट सेल्स। एंड हियर कौन से सेल्स थे? यहाँ पे अंदर कोइनोसाइट सेल्स थे जिनकी हमने बात की थी, विच इज हेल्पफुल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स हैं? नाइडोब्लास्ट। ओके, दीज नाइडोब्लास्ट हैविंग सम निमेटोसिस्ट कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं? अगर कहीं if there will be some prey, okay, these nidoblast cells will attack to that prey, क्योंकि कैसे होते हैं? ये stinging cells, यानी कि जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे चिपक जाते हैं। okay, so they are having some sticky like structure जो कि क्या करेगा? अपने prey को पकड़ सकता है आसानी से। okay, so the role of this nidoblast is what? For capturing the prey, right? So and these are present where? Outside the body, and they are having nematocyst which is having capsule like structure, right? And what is the role of this nidoblast? nidoblast का फूड को कैप्चर करना नहीं है, एंकरेज, यानी कि इसमें स्टिंजिंग सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे? अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे से पकड़ बना के रखेंगे। इट मीन्स दैट दे कैन होल्ड इट सेल्फ वेर एवर दे आर लिविंग, सो दैट द फंक्शन ऑफ दिस नाइडोब्लास्ट इज एंकरेज। इसका काम क्या है? एक तो एंकरेज प्रोवाइड करना। सेकेंड फंक्शन इज डिफेंस। इफ समवन इज गोइंग टू अटैक दीज organisms, these animals, so they are having nidoblast which is having nematocyst, जिसकी वजह से क्या करेंगे? वो अटैक कर सकते हैं किसको? प्रे को, and they can protect themselves too, right? And a third function which I mentioned here, food capturing. okay, अपने फूड को भी कैसे कैप्चर? एक तो अपने आप को बचा भी सकते हैं, ठीक है, अगले से, और दूसरा दे कैन टेक फूड और अपना कोई भी प्रे को क्या कर सकते हैं? कैप्चर करके उसको खा सकते हैं। सो वी कैन से आप खाना कैसे? बिकॉज दे आर हैविंग दिस नाइडोब्लास्ट। ओके, ये क्या करेंगे? दे विल इंजेक्ट इनटू द प्रे पे इंजेक्ट करेंगे और वहाँ क्या करेंगे? कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि द प्रे विल गेट पैरालाइज।
ओके, प्रे कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम पैरालिटिक एंड द प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म गेट सॉल्व्ड हियर, राइट। नाउ अगेन इट इज मेड अप ऑफ सम स्केलेटन, इसको रहने के लिए कुछ स्केलेटन की भी जरूरत होती है। सो द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी नो दैट दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज हाउ मच हार्ड, okay, so it provides hardness to the body of the Cylindrica, right here. So we have done the body wall of the outer structure of Porifera and Cylindrica. Now we'll talk about the Tenophora. If you will see the outer part of the Tenophora, we can say that I have drawn the structure, बॉल सा कुछ structure होगा जिसे हम walnut कह रहे हैं, sea walnut. So it is having 8 external rows of ciliated complex. इसका क्या है, इसके बारे में क्या कुछ हम कह सकते हैं distinct feature, किसके पास क्या है 8 complex. If you count, they are having 8 complex of ciliated complex. और कैसे ये जो complex होंगे वो कैसे होंगे, इनमें cilia लगा होगा, आपने देखा होगा पैरामीशियम में भी, ओके। सो दीज आर हैविंग कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स किस पे हेल्प करेंगे, लोकोमोशन के लिए, ओके। अब कंपेयर कीजिए पॉरीफेरेंस में क्या थे, फ्लैजिलेटेड, जिससे वाटर सर्कुलेट हो रहा था बॉडी के अंदर, ओके। यहाँ पर इनके पास क्या है, सीलिया है जो क्या प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, राइट हियर. So this is providing locomotion to the Tenophora. Now along with this they are having one pair of long pair means they are having two लॉन्ग सॉलिड रिटेक्टाइल टेंटिकल्स. इनके पास कुछ टेंटिकल्स भी हैं जो क्या करेंगे, विच विल एक्ट एज ए एडेसिव सेल. जैसे यहाँ पे इनके पास नाइडोप्लास्ट सेल थे, वो क्या कर रहे थे, कहीं पर जाके इंजेक्ट कर रहे थे और प्रे को मार दे रहे थे. इसी तरीके से इनके पास क्या है, इनके पास भी कुछ टेंटिकल्स हैं. व्हाट दे आर हैविंग रिटेक्टाइल टेंटिकल्स विच हैव एडेसिव सेल्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कोलोब्लास्ट. अब आपको याद रहेगा यहाँ में इंपॉर्टेंट कौन से सेल्स थे, कोइनोसाइट्स. यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट थे, नाइडोब्लास्ट, और यहाँ पे कौन से, कोलोब्लास्ट. ओके, so we can say that this coloblast is important for capturing the food. किसके लिए हेल्पफुल है, जो अपने प्रे पर जाएंगे और अटैक करेंगे, यानी कि उसको खींच लाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या एडेसिव सेल्स हैं जहाँ पे जाके स्टिक हो जाते हैं. सो वी कैन से दे आर हैविंग द कोलोब्लास्ट सेल विच विल एक्ट एज अ फूड कैप्चरिंग, right? And if you will see the skeletal system in case of Tenophora, so it is absent in case of Tenophora, right? Here I have drawn this diagram in which we know that there is a blind sac body plan, okay, mouth is present, or we can say rudimentary is some structure like anus, but exactly it is not an anus, right? So outer part is epidermis, अंदर क्या है, कुछ गैस्ट्रो डर्म लेयर, अंदर बाहर हमने क्या बोला, एपिडर्मिस, एंड अंदर देयर विल बी गैस्ट्रोडर्म. एंड इफ यू विल सी दिस मिडल स्ट्रक्चर, अगर आप मिडल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो व्हाट इट इज देयर, मीजोग्लिया, सॉफ्ट कुछ स्ट्रक्चर होगा जो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इस तरफ पे, ओके. एंड सम कॉम्स आर प्रेजेंट हियर विच विल एक्ट एज अ सीलिया, जिसमें सीलिया लगे होंगे, एंड इट विल हेल्पफुल फॉर द लोकोमोशन. सो हियर वी हैव कंपेयर्ड the three phylum on the basis of these 7 characters. Along with these 7 characters, we are having some more. For example, we will talk about the digestive system, we will talk about the respiratory system, we will talk about the circulatory system. Now, can you tell me that what is the digestive system? Here, the digestive system is what? There is no digestive system. What type of cell aggregate it is there? तो कैसा होगा, यहाँ पे digestive system था ही नहीं. Now here if we'll talk about the digestive system, it is incomplete. यहाँ पे digestive system कैसा होगा, incomplete. Here also digestive system is incomplete. Okay? हम यहाँ पे digestive system की बात कर रहे हैं. Digestion तो होगा, लेकिन कैसा होगा, intracellular. In case of poriferians, the digestion will be intracellular. जो भी digestion होगा वो कहाँ पे होगा, सेल के अंदर ही होगा. Okay? And here in case of Cylindrica and Tenophora, the digestion system will be extracellular और intercellular, दोनों ही possible है, right? But system नहीं है, कोई proper system नहीं है. क्या होगा, कोई चीज़ अंदर गई है तो अंदर जाके digest हो गई. That much is there. Now if we talk about the circulatory system, जब टिश्यू ही नहीं है तो organ नहीं होंगे तो कोई system ही नहीं है. It is absent in case of all 3 phylum. Okay, so this respiratory system is also absent, circulatory system is also as absent,
right up to here. So now we will discuss some more structure. Okay, if I will see here, we will talk about some. So now another characteristics of these phylums we will discuss it here, that is digestion. We have completed 7-1 and 8-1 digestion. As we have done, system is absent, whether it's the digestive system or circulatory system or the respiratory system or the excretory system, right? So if we'll talk about properly the digestion, how it takes place, in case of Porifera, we have done that digestion takes place, or whatever they have to take food and it will get break down inside the cell only. So it will be intracellular digestion. Like this, in case of Cylindrica, the digestion takes place extracellular or intracellular. Same thing in case of Tenophora also, there will be digestion inside the cells only, okay, or inside the body. No system is present. Now come to the another one, reproduction. Reproduction is important. Why? Because the different type of reproduction takes place in these 3 phylums. So if you will talk about the Porifera, okay, so reproduction can be sexual or it can be asexual. Whenever we are talking about asexual, that there will be no gamete formation. So what will be the method? Vegetative method, or we can say the fragmentation method, gemule formation. तो यहाँ पे क्या होगा? Fragmentation, कोई body part कट हुआ और it is able to form a new animal or new individual. So asexual reproduction is also possible, as well as the sexual reproduction is also possible in case of Porifera. Now see students, what happens that in the lower animals, if you will talk about the lower animals, the power of regeneration capacity is very high. Okay, so that's why the regeneration capacity is high, so asexual reproduction is possible. Okay, and sexual reproduction, both gametes should be there, male and female. Now if we will talk about the Cylindrica, asexual and sexual, both reproduction can be possible. But now if we will talk about the Tenophora, it is very important. Only sexual reproduction takes place in case of Tenophora, right? No other method of reproduction. Now if we will talk about the sexual and asexual, so for the sexual mode, what is required? 2 gametes are required. So what will be the structure, or what will be the condition? It would be the bisexual. It means that both the gametes present inside the same body. Bisexual मतलब दोनों ही sex किसमें present है? एक ही animals में. Okay, and it is also known as hermaphrodite. Same thing if we will talk about here. Okay, so in case of Cylindrica also, right, and in case of Tenophora, there would be bisexual and hermaphrodite, means that both the male and female gametes can be produced inside the same, right? Now if you will talk about the fertilization, as we have done in the general characteristics, fertilization can be external or it may be internal. External is what? When there will be fusion of male and female gamete outside the body of female body, and internal when there will be fusion inside the female body. So here what type of fertilization in case of Porifera? Internal fertilization. As we are saying that both the gametes are present, but what happens that there is a protogyny condition, okay? And due to that, the if any male gamete will move from the one individual, and it will move from the male from the body of any individual and move towards the water. Water के through क्या करेंगे? वो अपने gametes को move कराएंगे, right? So the male gamete will reach up to the female gamete through the water, and here inside the female there will be a fertilization takes place. Now if we'll talk about the Cylindrica, so it can be external or it can be internal, right? दोनों ही condition possible है. It can take place outside the body also and inside the body. Okay. Now if we'll talk about the Tenophora, what type of fertilization takes place? External fertilization, means that they will, both the male as well as female, they will send their gametes to the outside and their fertilization takes place. Okay. Now another one is the development. And what is development? That whether they are directly giving birth to the young ones, okay, there will be no larval stage, or if it will be indirect, then there will be larval stage.
ये होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। क्या होता है, एक ऐसी बीच की लार्वल स्टेज होती है जो किससे अलग होती है, अपने पेरेंट्स से। दे विल नॉट रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, right? And this larval stage will be different. So in case of poriferans, in case of Cylindrica, as well as in Tenophora, what type of development you can see here? Indirect development. Why? Because if you see here, what happens that there will be some larval formation. Now this question is important कि किस में कौन सा larva present होता है, right? So if we'll talk about the Cycon, Cycon is one of the example of Porifera. So what type of larva? The name of the larva is Amphiblastula. Okay, and Leucosolenia is also the example of Porifera, and the larval formed by the parenchyma. Okay, if I will ask that this Amphiblastula parenchyma larva is the example of what, you will answer the Poriferans. Okay, Porifera में ये example होता है. If I specifically ask, then you can say Cycon and Leucosolenia, right? Now same like it in Cylindrica, Obelia and Aurelia. Okay, Obelia having larval stage which is known as planula, and Aurelia ephyra. Okay, and both are the examples of the Cylindrica. ठीक है, ऐसे जो प्लानुला और एफाइरा कहाँ पे हमें देखते हैं लार्वल स्टेज, ओबेलिया एंड ऑरेलिया, दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ Cylindrica, right? Now another one is Sidipid larva. Okay, Pleurobranchia is the example of Tenophora. Okay, so this is also known as sea gooseberry. Now what are the example of Tenophora? This Pleurobranchus and Tenoplan. Okay, so in both if we'll talk about, then what type of larva is present in case of Tenophora? Sidipid larva. Is it clear? So we have done these different types of larva. You have to memorize that in which individual or in which animal what type of larva present. Okay, and as larva is present, so what type of development? There will be indirect development. Okay, now we will talk about the distinctive feature. यहाँ तक तो हमने क्या बात की, कुछ ऐसे features की अलग अलग फाइलम के, बट ना कुछ ऐसे features हैं जो कि we must know that what is that feature. Okay, in case of Porifera, see the name itself indicates Porifera. Pori relates to something related to pore, जिनमें क्या हो, pores present हो. So outside their body they are having different minute pores. Okay, we have done these minute pores are known as ostia. So इसीलिए हमको क्या कह रहे हैं, Porifera. So this body with pores is a distinctive feature of the Porifera, which is not present in any of an individual. Okay, so first thing we have done, that body having the pores. Okay, that's why it is coming from the Greek word that is pori and pherin. Okay, pori means pore and pherins means bearing. Those who are bearing these pores, those are known as poriferians. Now here I have mentioned some example of the Porifera, that is Cycon, Spongilla, Euplectilla, Euspongia. So what is important about it, that what are the common names? Okay, common names of the Cycon. अगर हम साइकॉन की बात करें तो कॉमन नेम की हम कैसे कह सकते हैं, दीज आर द क्राउन स्पॉन्ज. क्राउन स्पॉन्ज इज द कॉमन नेम ऑफ साइकॉन. एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ स्पॉन्जिला? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. यूप्लेक्टिला, वीनस फ्लावर बास्केट, बिकॉज इट्स समहाउ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर. कैन सी कैसा है इसका स्ट्रक्चर देखने में, फ्लावर्स के बास्केट की तरह, इसीलिए यूप्लेक्टिला वी सेड वीनस फ्लावर बास्केट. एंड यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज. ओके, उनके दिखने के स्ट्रक्चर में लोकल लैंग्वेज में हमने कुछ उनको नेम दे दिए जो कि देखकर पता लगाएं कि क्यों कैसे दिखते हैं ये. राइट, नाउ कम्स टू द पॉइंट Cylindrica. ओके, सेम थिंग वी हैव डन digestion, reproduction, fertilization and development. Right, so what will be the distinctive feature? इसका distinctive feature क्या है? इसका distinctive feature है Nitroblast. As we have said, these are the stinging cells. ओके, कैसा है, जिनमें डिमेटोसिस प्रेजेंट है और ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग देम. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग नाइडोब्लास्ट, एंड दीज नाइडोब्लास्ट having these structure, that's why this Cylindrica also known as Cnidarians. इनको हम Cnidarians भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट है. ओके, एंड another name is Cylindrica. So how the Cylindrica name? Cylindrica, if you will split this term, seal related to something
cavity, and we know they are having the gastro cavity present in the Cylindrica, and ant are related to intestine and it are related to group. Those group which are having cavity in their intestine, it is known as Cylindrica, right? And another name what we are saying, Cnidarians. What are they? Cnidarians or Cnidaria. So this Cnidarian word comes from where? Cnide, K-N-I-D-E, Cnide. So what does it mean? It means sting. And this sting is what? This sting is Nitroblast because it is a stinging. Okay, इसी की वजह से इसका नाम क्या हो गया? Cnidaria, right? And very important thing about Cylindrica or Cnidaria, that it possesses dimorphic. What is the meaning of dimorphic? Which can show टू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसको आप दो मॉर्फोलॉजी कैसे दिखते हैं, आप देखिए आपको जिसकी मॉर्फोलॉजी टू यानी कि दे कैन बी शो इन अ टू टाइप्स. ओके, व्हाट आर दे? पॉलिप एंड मेडुसा. ओके, एक ही इंडिविजुअल क्या कर सकता है? अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, बिकॉज फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल टू asexual. Okay, so here I have drawn this example of polyp. Okay, and this is example of Medusa, right? So ऐसी morphology इसमें आपको दो dimorphic structure दिख रहे हैं, वो किसमें होता है? Only and only in Cylindrica. So this dimorphic or we can say polymorphism is the distinct feature of the Cylindrica. Okay, that much. And now, so due to this, what will happen? There will alternation of generation, as we have done in case of plant kingdom also. So what is alternation of generation? In which there will be exchange in their life cycle between sexual and asexual reproduction. ये हो रहा था. So here also there will be changes from asexual to sexual and sexual to asexual reproduction, which is known as metagenesis. Right? So in case of animal kingdom, what we are using term? Metagenesis, which is same like the alternation of generation. An example is Obelia. Obelia possesses two types of structure, polyp and medusa. So here I have written, if polyp will convert into medusa with the help of asexual reproduction. ठीक है, पॉलिप मेडुसा में कब चेंज होगा? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. और मेडुसा पॉलिप में कब चेंज होगा? जब उसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Right up to here. So polyp and medusa are converting with each other. They are exchanging with each other, and one of the example is Obelia here. Right. So now on the basis of this structure, we have categorized this polyp and medusa. अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिप? पॉलिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ससाइल, यानी कि एक जगह ही रहता है. Okay, if we'll talk about the medusa, it is free swimming. It can move from one place to another. ये क्या कर सकता है? Freely swim कर सकता है water में. Another point is cylindrical. If you'll see the structure of polyp, polyp कैसा structure का दिख रहा है आपको? Cylindrical structure का, like this. Okay, if you will see the structure of medusa, it is of umbrella shaped. कैसा structure है इसका? Umbrella shaped, right? And if you will talk about a third point, the mouth and tentacles. This is the mouth and these are the tentacles of the polyp. Mouth जो है और tentacles polyp के कहाँ हैं? Upward, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, right? And if we'll talk about the mouth and tentacles of the medusa, it is downward. वो कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ है. So this is the three difference between polyp and medusa, and this question is very important, right? Now what is the examples of polyp? Hydra, Adamsia. These are the examples of polyp. And what are the example of medusa? Aurelia. So whole sum we have done so many examples of Cylindrica also. But again there are some common names. If you will talk about Adamsia, sea anemone, Aurelia, jellyfish, Obelia, sea fur. Okay, so don't confuse between Aurelia and Obelia. Aurelia is jellyfish and Obelia sea fur. Now again don't confuse between Obelia and Gorgonia. Okay, Obelia को हम क्या कह रहे हैं? Sea fur and Gorgonia sea fan. Okay, and another example of this Cylindrica is Physalia, which is very important. Physalia बहुत important examples है Cylindrica, Cylindrites. Why? Because it is also known as Portuguese man of war. Right? So we can say that these are some characteristics or the distinctive feature of the Cylindrica. Now talk about the Tenophora. Tenophora में ऐसी क्या अलग चीज देखी आपने? 8 complex we have done. Then coloblast cell. Here having nidoblast cells. Okay, they are having coloblast cell for capturing their
food or for taking their food. Okay, and because it is having adhesive nature है जहाँ पे जाके stick कर जाएगा. And again bioluminescence. Okay, this point is very very important. Bioluminescence is the distinctive feature of Tenophora only and only. ठीक है, यहाँ पे किसका था, जैसे कि मेटाजेनेसिस डिस्टिंक्ट फीचर सिलेंट्रेटा था, यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस. एंड व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? इट इज हैविंग द एबिलिटी ऑफ द लिविंग वन टू एमिट द लाइट. ये क्या कर सकते हैं, लाइट एमिट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सम फोटो सेल्स. Okay, those who are having the photo cells, they are capable to emit the light, and this phenomena it is known as bioluminescence. Okay, and again I have written monomorphic. Why? Because it is having only one form, but here it is dimorphic because it is having two forms. Okay, so today we have completed these 3 phylums and about all the features, and in the next session we will take another phylums. Right, so that's all for today. Thank you.